breaking news that's coming in. Paulami and Hemendra reporting for us that Mohan Yadav is the next Chief Minister of Madhya Pradesh. First news break coming in here on India Today. We're getting you the inside track of what's happening in the huddle. We can tell you that the central observers have conveyed to MLAs of the BJP right now that it is the MLA from Ujjain, Mohan Yadav, who has been chosen as the next Chief Minister of Madhya Pradesh. Big surprise coming in. There were a lot of names doing the rounds. Was Mohan Yadav really in the mix? There was a lot of talk of the likes of Prahlad Patel and several other OBC faces being really the lead. But at this point, it's Mohan Yadav, MLA from Ujjain South, who is the chosen one. And this has come as a huge surprise for everyone, including the BJP supporters gathered outside there at the BJP headquarters. Now, Mohan Yadav is an MLA from Ujjain South, has served as a minister, was in fact the Minister of Higher Education of Madhya Pradesh, and he is now going to be the next Chief Minister of Madhya Pradesh. In fact, at just about 58, it looks like the BJP has decided they're going to be going in for a new mix, for a new face, and that's why Mohan Yadav has been chosen. What this confirms is that it's the end of Mamaji's rule in Madhya Pradesh. Shivraj Singh Chouhan not being chosen. It's Mohan Yadav. Paulami. That's right. That's the information that's coming in right now. Mohan Yadav will be the next Chief Minister of Madhya Pradesh. The MLA from Ujjain Dakshin. The MLA from Ujjain Dakshin, Mohan Yadav, is going to be the next Chief Minister of Madhya Pradesh. He became an MLA for the first time in 2013, and then in 2018 he was a cabinet minister in the Shivraj Singh Chouhan government. He was the Minister for Higher Education. A big surprise. We discussed so many names, Dakshita, so many probables in terms of who could be the Chief Minister of Madhya Pradesh, from Shivraj Singh Chouhan, the caretaker Chief Minister, to Narendra Singh Tomar, to Prahlad Patel, to Kailash Vijayvargiya, to Jyotiraditya Scindia, to V.D. Sharma. But Mohan Yadav is expected to be the next Chief Minister of the state of Pradesh. Let's try and speak to some of the supporters of the Chief Minister incumbent over here, the Chief Minister, I beg your pardon, designate over here. Already there is a great sense of surprise over here. क्या आप आश्चर्यचकित हैं? बिल्कुल, हमारे उज्जैन संभाग से हमारे सीएम साहब रहेंगे. मैं उन्हें बधाई देता हूं अपनी ओर से, अपने परिवारजनों की ओर से. बहुत बहुत बधाई. बढ़िया, अच्छा लगा. जय श्री महाकाल. आपको लगा था कि मोहन यादव जी हैं रेस में हैं? नहीं, ये राष्ट्रीय नेतृत्व का विचार बनाया है उन्होंने. जो एक छोटा कार्यकर्ता भी सीएम बन सकता है. मोहन जी यादव 3 बार के हमारे विधायक रहे हैं, उन्हें बधाई. मोहन जी यादव के काम के बारे में बताइए, क्योंकि आप उज्जैन से आते हैं. नहीं, मोहन जी यादव एक सरल व्यक्तित्व के धनी है. छोटे कार्यकर्ताओं पे पूरा ध्यान देते हैं और लगातार अपनी जीत का परचम वहाँ पे लहराते हुए आए हैं. क्या यहाँ पर लोग थोड़ा आपको आश्चर्य हुआ नाम से? अरे आश्चर्य नहीं, बहुत अच्छा हुआ. बहुत ही अच्छे सीएम बनेंगे. वो बहुत ही अच्छे इंसान है. जो भी पार्टी का निर्णय लिया बहुत ही अच्छा रहा. आपको लगता है कि ये सही डिसीजन है? नहीं. क्यों? सीएम शिवराज सिंह चौहान ही रहेंगे. नहीं, मामा तो फर्स्ट प्रायोरिटी थी, लेकिन अब जो भी बना अच्छा है. देख लो, मामा ही रहेंगे. मामा ही रहेंगे? ऐसे कैसे? मुख्यमंत्री मोहन यादव? नहीं, हम बता रहे हैं. आपको लगता है कि मामा अब इस रेट से हटेंगे नहीं? यादव का डिक्लेयर हो गया, सुनने में आ रहा है. हाँ जी, डिक्लेयर हो गया. आप बताइए क्या? हमने तो पहले ही कहा था कि ओबीसी, आपको याद होगा, कहा था. तो आपको कैसा लगता है चॉइस? हालांकि हम तो शिवराज जी अच्छे थे, लेकिन यदि वो हटते हैं तो हमने तो ओबीसी चेहरा बोला ही था. तो आपको इस चेहरे पर कोई आपत्ति? ओबीसी चेहरा है ना, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी. अच्छा, तो आप आपको क्या लगता है? जी, सरप्राइज तो हुए हैं, लेकिन संगठन ने जो निर्णय लिया है वो सही साबित होगा. संगठन ने निर्णय लिया है तो सही होगा. हाँ, मुख्यमंत्री के सही साबित होंगे, ऐसी उम्मीद करते हैं. कोई सोच नहीं रहा था कि मोहन यादव जी बनेंगे. सब लोग सोच रहे थे प्रहलाद जी पटेल या नरेंद्र सिंह तोमर जी ही बनना चाह रहे थे, क्योंकि केंद्र के लाल खट्टर का हुआ था. केंद्र में बहुत यहाँ पर्यवेक्षक है. मोहनलाल खट्टर जी पहली बार हरियाणा में विधायक बने और मुख्यमंत्री बन गए, और ये वैसे ही चौंकाने वाला. जब मनोहर लाल खट्टर जी का नाम कभी किसी के सामने आया नहीं था, और सोच भी नहीं, और वो आज पर्यवेक्षक भी है यहाँ. ये काफी इंटरेस्टिंग
तो जैसा हरियाणा में हुआ था वैसे ही मध्य प्रदेश में हो गया। पार्टी ने वही किया, पार्टी ने सरप्राइज कर बिल्कुल किया। मध्य प्रदेश में बिल्कुल साफ समझ में आ रहा था कि कोई नया नाम आएगा, चौंकाने वाले रिजल्ट आएंगे और मोदी के मन में जो है वो आएगा। तो संघ से निश्चित रूप से जो है मोहन यादव का नाम निकल के आया और आरएसएस का व्यक्ति जो मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बन के बैठा है और मोहन यादव सबके साथ लेके चलने वाले, सबका विकास करने वाले और मोहन यादव मोदी के मन में थे, इसलिए मोहन यादव को बनाया गया है। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता रहे, अच्छे कुशल संगठनकर्ता भी है और सरकार में मंत्री रहते हुए उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। उच्च शिक्षा में जो सुधार हुए हैं उसमें उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। आपको लगता है कि चॉइस सही रहा? हम तो कार्यकर्ता हैं, जो भी बनेगा, लेकिन उनको हम पर्सनली जितना जानते हैं उस नाते मुझे लगता है ठीक चयन हुआ है। और बताइए पर्सनली क्या जानते कि उनके स्वभाव के बारे में? सरल और सहज स्वभाव के हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के वह राष्ट्रीय मंत्री रहे हैं, लंबे समय तक पूर्णकालिक कार्यकर्ता के रूप में वह उन्होंने इस मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाहर काम भी किया है और संगठन का भी अच्छा अनुभव है और उनको सरकार चलाने का भी अनुभव है। और मैं मानता हूं कि उनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश विकसित मध्य प्रदेश जो था उसको और आगे ले जाएंगे, ये मेरी शुभकामनाएं भी है। क्या प्रतिक्रिया यादव के नाम? जो पार्टी ने निर्णय लिया है बहुत अच्छे हैं। वो पहले भी विद्यार्थी परिषद से बहुत पुराने कार्यकर्ता, सरल हैं और कार्यकर्ताओं के बीच में मिलनसार हैं। और जो उच्च शिक्षा मंत्री जो अभी थे, उच्च शिक्षा मंत्री में जो भी उनने मध्य प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में निर्णय लिए हैं वो बहुत ही अभूतपूर्व हैं और वो हमें उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के विकास में बहुत ही योगदान देंगे। वो बहुत ही सरल और व्यवहार के धनी हैं। डॉक्टर मोहन यादव जी एक अच्छा नाम मध्य प्रदेश के लिए निकल के आया, निर्विवाद नाम है, संघ की पृष्ठभूमि से हैं, पूर्व छात्र नेता रहे हैं, विद्यार्थी परिषद के स्थापित छात्र नेता रहे हैं, लंबे समय तक संगठन मंत्री के रूप में उन्होंने कार्य किया और हायर एजुकेशन मिनिस्टर के रूप में उन्होंने क्रांतिकारी शिक्षा के क्षेत्र में निर्णय लिए हैं। और उन्होंने ही निर्णय लिया था कि जो शिक्षा से जुड़े हुए छात्रों के जो राजनीति से प्रेरित मामले हैं तो उन्होंने बहुत सारे मुकदमे भी छात्र हित में वापस लिए थे। ऐसे अनेकों क्रांतिकारी निर्णय और संघ की ओर से ये नाम आया है, नया नाम है, बिल्कुल निर्विवाद नाम है और निश्चय ही मध्य प्रदेश में जो विकास का क्रम है वो और तेज गति से मध्य प्रदेश विकास की मार्ग पर अग्रसर होगा। नरेंद्र सिंह तोमर को भी पद मिला है तो ये तो काफी इंटरेस्टिंग है कि क्या पद मिला है उनको नरेंद्र सिंह तोमर, क्योंकि सारे इतना दिग्गज नेता है पार्टी में, सबको तो स्टेट कैबिनेट में स्पीकर के तौर पर एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा। पर आपको लगता है कि एक चेंज आया है, जनरेशनल चेंज? नरेंद्र सिंह तोमर जो खबर आ रही है स्पीकर बन गए हैं अब असेंबली के। निसंदेह हमें पूर्ण अनुमान था, जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में माननीय रमन सिंह जी को सीनियर हमारे लीडर हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, हमें अनुमान था कि अगर कोई नया नाम आएगा तो नरेंद्र सिंह तोमर जी को लंबे समय का अपना अनुभव है, संवैधानिक अनुभव है और लंबे समय से हमारे वो सीनियर लीडर रहे हैं। उस नाते जिस प्रकार से हमें मेजॉरिटी मिली है, कोई न कोई सीनियर लीडर इस स्पीकर के रूप में हम देखना चाह रहे थे और माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी उसके सर्वथा देख रहे। सीएम सिक्योरिटी पहुंच रही है, मोहन यादव शायद इसी में बैठ के निकलेंगे, उनके लिए सिक्योरिटी पहुंच रही है इस वक्त। तो काफी यहाँ पर जो है हलचल बढ़ गई है। देयर इज अ लॉट ऑफ एक्शन दैट्स टेकिंग प्लेस। वी आर ऑफ कोर्स वेटिंग फॉर ऑल ऑफ दीज टू कम बैक, ऑल ऑफ दीज लेजिस्लेटर्स टू कम आउट राइट नाउ। व्हाट वी आर आल्सो लर्निंग इज दैट जगदीश देवड़ा एंड राजेश शुक्ला डेप्यूटी सीएम बन गए हैं, नरेंद्र तोमर स्पीकर बन गए हैं। जगदीश देवड़ा, राजेश शुक्ला उप मुख्यमंत्री, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर इज द स्पीकर। एक तरह से आपको लगता है कि जेनरेशनल शिफ्ट आया है, जनरेशन बदली है मध्य प्रदेश में। शिवराज सिंह चौहान का एक जनरेशन चला जा रहा था, अभी एक युवा नेता सामने आ रहा है, वो मुख्यमंत्री होगा। युवा नेता बिल्कुल मुख्यमंत्री होगा और हमें मध्य प्रदेश को वह प्रगति देंगे, उन्नति देंगे। यही पूरी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एवं मध्य प्रदेश की जनता की यही पुकार है कि इस प्रदेश में और अधिक विकास के कार्य हों और अच्छा विकास हो। हमें पूर्ण उम्मीद है कि मोहन यादव जी ये कार्य कर कर दिखाएंगे और वह करेंगे ये कार्य। और हमारे जो स्पीकर हैं वह भी अच्छे, नरेंद्र सिंह तोमर जी जो बने हैं वह भी बहुत अच्छी पर्सनालिटी हैं, अच्छे मंजे हुए नेता हैं। जो अभी केंद्र में जो अभी हमारे कृषि मंत्री थे, कृषि मंत्री थे केंद्र में,
वह जो निर्णय हुआ यह भी बहुत अच्छा निर्णय हुआ है। और जो उम्मीदें काफी है। There are a lot of expectations. Heminder, my colleague, is also joining us. Heminder broke this news first here on India Today that Mohan Yadav will be the new Chief Minister of Madhya Pradesh. Heminder, I'm going to ask you this question. Are you surprised? Well, absolutely. No one expected the name of Mohan Yadav to be the Chief Minister of Madhya Pradesh. No one expected that Mohan Yadav could be the next Chief Minister of Madhya Pradesh. In fact, I'm surrounded here by BJP workers. The moment we flashed this, the moment we said that Mohan Yadav is going to be the next Chief Minister of Madhya Pradesh, they were stunned. They said there is no supporter of Mohan Yadav here right now. Let's find one. But I have managed to find one. Here he is. बताइए मोहन यादव जी के बारे में पहले बताइए। मोहन यादव जी का राजनीतिक जीवन विद्यार्थी परिषद से शुरू हुआ। 2003 में टिकट के लिए उज्जैन से बड़नगर से टिकट मांगी थी। उज्जैन से बड़नगर पैदल गए तो दीदी ने बुला के कहा बेटा मैंने टिकट शांतिलाल दवाई की दे दी है, अगली बार तेरी टिकट पक्की। उसके बाद यादव जी विकास प्राधिकरण में रहे, उसके बाद MLA बने, फिर शिक्षा मंत्री बने। आरएसएस की पृष्ठभूमि से आते हैं। हाँ, आरएसएस की पृष्ठभूमि से आते हैं। आपने सोचा था? अभी तो आपने भी नहीं सोचा था साहब, किसी ने नहीं सोचा था। कालों के काल महाकाल। तो महाकाल की नगरी से he comes from Ujjain and he's an MLA from Ujjain, so from Mahakaleshwar there is another messaging happening here, not just an RSS man from an RSS background but also coming from Ujjain. So the BJP top leadership, as it is known for springing surprises, they have pulled out this rabbit from their hat and have given Mohan Yadav as the next Chief Minister of Madhya Pradesh. But let me tell you, there was a lot of controversy over Mohan Yadav even before he was elected. There were several allegations made against him, but that today is not the time to talk about them because they were never actually proved. But Mohan Yadav, an RSS man, has been chosen by the Bharatiya Janata Party, and this has come as a huge surprise, not just to me, but all these BJP supporters who are gathered over here. Follow me? Heminder, if I may ask you, what do you think were the factors that played in Mohan Yadav's favor? Why did Prime Minister Modi zero in on Mohan Yadav? Well, Mohan Yadav comes from an RSS background, that is a given. He has been an education minister in the previous government in Madhya Pradesh, and as one of his supporters whom I managed to find out from this crowd was telling us that he had done marches also, he had walked on several occasions also. He's someone who has worked really hard. I mean, he has worked his way up. So that could be one reason. Another reason could be springing a surprise. I mean, they have just surprised everyone. Then, of course, he's a Yadav. So, though there is no, there are pockets of Yadav influence in Madhya Pradesh, but the Yadavs are not dominant OBCs, so to say, in Madhya Pradesh. But then he comes from that community. So, if you are replacing an OBC chief minister, it's being replaced by another OBC. That's what we were talking about. It's not Prahlad Patel, but Mohan Yadav. So, that is another reason. Plus, I think the major factor that has gone into his selection is his RSS background. The fact that he can now also, because if he has someone who has got the backing of the RSS, he would be in a position to control all these top leaders who have been sent from Delhi to be MLAs. Narendra Singh Tomar would be the next speaker. That is what we are hearing. There are going to be two deputy chief ministers. That's also what we are hearing. So, but there are others. What would happen to Shivraj Singh Chouhan? What would happen to Prahlad Patel? These people had fought elections. Their names were doing the rounds. B.D. Sharma, of course, the president of the BJP, still remains the president of the BJP. But yes, the BJP top leadership has once again managed to surprise everyone. And Mohan Yadav is now making history. He's going to be the next chief minister. Okay, Heminder, just hold on for a moment. We're getting visuals right now from inside the Legislative Party meeting of the Bharatiya Janata Party, where Mohan Yadav is being felicitated by, of course, the top brass of the party, the central observers who made that announcement. Manohar Lal Khattar, Haryana Chief
Minister, announced the name of Mohan Yadav as the next Chief Minister of Madhya Pradesh. Mohan Yadav being felicitated. It will be interesting, of course, to find out later how did Mohan Yadav react to his name being announced. Was he anticipating it? Did he have any inkling at all? Or was he completely taken aback, possibly looking around and wondering, was that me? Was that my name that was announced? Because that's what we hear about what happened in Gujarat last when Bhupendra Patel was announced as the Chief Minister. Bhupendra Patel was literally sitting him in the last row of that Legislative Party meeting in the conference hall, and the name was announced by Narendra Tomar at that point of time, a central observer from the dais after a 45-minute long speech. And Bhupendra Patel, I beg your pardon, was suddenly told, "Sir, aap neta ban gaye." And his reaction was, "Arey neta to main hu." So fir someone said, "Arey sir, aap Vidhayak Dal ke neta ban gaye." That's when Bhupendra Patel realized that he is the next Chief Minister designate of Gujarat. It will be interesting, Heminder, to find out what was Mohan Yadav's reaction. मैं निवेदन करूंगा पार्टी के संबंधी प्रदेश अध्यक्ष Heminder, if you are able to hear me, we're of course getting pictures from inside that Legislative Party meeting from moments ago when when Mohan Yadav's name was announced as the next Chief Minister of Madhya Pradesh. And I was just recounting an anecdote that we only hear much later of how it happened in Gujarat, for instance, when Bhupendra Patel did not know that he was to be selected as the Chief Minister of Gujarat. He was sitting in the last row in the conference hall. Suddenly, the name was announced by Narendra Tomar, who happened to be a central observer from the dais, and someone turned around and told Bhupendra Patel, "Sir, aap neta baniye." Bhupendra Patel said, "Par neta to main hu." मन से वास्तव में भारतीय जनता पार्टी ये होती जोरदार ताली बजाए। मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ और आप सबका धन्यवाद अदा करता हूँ, केंद्रीय नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का, समूचे मंच का, मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता को हमारे सभी मित्रों ने मिलकर कर आपके मार्गदर्शन में जो जवाबदारी दी, यद्यपि मैं उस लायक नहीं हूँ, लेकिन आप सबका प्रेम, आपका आशीर्वाद, सहयोग मिलेगा तो निश्चित रूप से मैं कोशिश करूँगा। एक बार फिर आप सबका आभार, धन्यवाद। माननीय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय विष्णुदत्त जी शर्मा बयान आज की इस कार्रवाई का So this is a live press conference from Bhopal where the BJP, 8 days after its verdict in Madhya Pradesh, has anointed its next Chief Minister in Madhya Pradesh, Mohan Yadav. Dr. Mohan Yadav, the MLA from Ujjain, Dakshin, will be the next Chief Minister of Madhya Pradesh, a name that didn't figure in any of the roll calls of probables, across the landscape of those reporting on Madhya Pradesh. A surprise name that's come in now. We've got all the names flashing on your screen. Let's just dip in and listen in to this live press conference coming in from the MLA meet. अभी बात Shivraj Singh Chouhan, you saw stepping off the stage. There was a great deal of speculation about whether he would be retained or shunted. There is speculation about what next for Shivraj Singh Chouhan, but the man with the bouquet in your hands is the 57-year-old Chief Minister designate of Madhya Pradesh. A name that wasn't doing the rounds, that wasn't part of the circuit. Another surprise pulled out of the BJP leadership's hat. We're going to be hearing from him in just a moment from now. India Today's cameras trained on Dr. Mohan Yadav, three-time MLA from Ujjain. He's born in 1965. That makes him 57 years old, relatively young. Does this achieve the generational shift that the BJP was hoping to see in Madhya Pradesh? Well, we'll have to wait and see, but a relatively younger Chief Minister from the OBC community, not part of the names that were doing the rounds, very much in the BJP's signature style of pulling something out of its hat.
all of those angles will be made very, very clear. Let me get a quick word in from India Today's Preeti Chaudhary, who joins me now. She travelled extensively in Madhya Pradesh as well. Preeti, first reactions, Dr. Mohan Yadav. You know, and that's the reaction, Shiv. Dr. Mohan Yadav, I don't even think Dr. Mohan Yadav knew, because when the meeting actually began, he was sitting right in the corner and seemingly oblivious, is what our reporters are telling us. Quite like what went down when Bhupendra Yadav was told in Gujarat that he was going to be the chief minister. But to put the spotlight on this man, Bhupendra Patel, that he was going to be the chief minister in Gujarat. But to put the spotlight on this man, Shiv, interesting. You know, he's been bloodied in the line of Bharatiya Janata Party politics. He's been a student ABVP leader. You know, he's held the seat twice now. He's won it the third time around, which is South Ujjain. Interesting dynamic, because what was the quandary? The quandary and the question where the BJP came in was, will they replace Shivraj Singh Chouhan? And if they did, they will need an OBC face to do so. One of the rounds that were named, that was making the rounds, was that of Prahlad Patel, a Lodi OBC, a cabinet minister who had tendered in his resignation. Many would have thought, many speculations were that it could be Prahlad Patel, if not Shivraj. But body language says a lot, Shiv. We just saw Shivraj Singh Chouhan, who was so vocal up till yesterday, constantly giving sound bites, talking to the camera. It's a huge blow to Shivraj Singh Chouhan. It might be a generational shift or a huge shift in Madhya Pradesh politics, because the dynamics from here will completely change. What now? How will Shivraj Singh Chouhan be accommodated? That's the big question. But let's put the spotlight. You have a Narendra Tomar. You know, imagine, this is what the BJP does. Yes. And this could very well be the discipline of the Bharatiya Janata Party. A man who was the agriculture minister till 2 days ago will now be the speaker you know, in Madhya Pradesh. They've taken in all caste dynamics. You have an OBC, you have a tribal, and you have an upper caste. If you come down to the 3 levels, which is the chief minister and the 2 deputy chief ministers, and of course Narendra Tomar, who comes in as you know, the speaker. Absolutely. Preeti, I'm going to come back to you. Polomi is also with us on the ground. I just want to get some sound in from there. Let's go big with those pictures. Try and get some sound in. Dr. Mohan Yadav being completely inundated with bouquets. You know, nobody knows who those bouquets were intended for. Let's listen in. Let's just listen in. Mohan Bhai Sahab. Mohan Bhai Sahab. Mohan Bhai Sahab. अरे मोहन भाई साहब is the man everyone wants to get close to, be in the frame with, thrust the flowers that they're holding into his hands, because he's persona number 1 in Madhya Pradesh suddenly. As Preeti said, he was probably sitting in a corner. You know, who knows? He was sitting in a corner. I was just looking at, you know, what was interesting was, Shiv, I was actually looking at when all of them came together. Could it have crossed his mind, is my question. Could it have crossed his mind that he may be a possibility? You know, I doubt it. He must have been happy seeing his name not on the list. I doubt it. I doubt it if it had crossed his mind. To be honest, I really want to know, when was, you know, Mr. Yadav, Dr. Mohan Yadav, told that he was going to be the chief minister. Did he hear it? Yeah. And that's what I want to know. And, you know, indication, Shiv, if I was Vasundhara Raje Scindia, because tomorrow the action shifts to Rajasthan, the writing's on the wall. If they can remove Shivraj Singh Chouhan, who's come in, with a pro-incumbency vote, and especially the kind of commentary coming in from him, and the kind, and it was a wave election, and a lot of credit, of course, goes to Mr. Chouhan as well. If he can be removed, we can well imagine who the Rajasthan chief minister would be. But having said that, let's put the spotlight right now, Shiv, on the names that have come to light. Dr. Mohan Yadav is the new chief minister. Please stay with me for a moment. Yes, I'll come right back to you, because Hemendra is with us and he has Dr. Mohan Yadav's nephew with him. Over to you, Hemendra, family member of the new chief minister of Madhya Pradesh. Well, thank you so much. I have, it's mama time in Madhya Pradesh. I mean, one mama has gone and I have someone with me, of whom the next chief minister of Madhya Pradesh is the mama, Mr. Prem Yadav. He's also a corporator. पहले तो सबसे पहले बधाई हो आपको. सबसे पहले तो ये बताइए कि आपका जो अगले मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के होने वाले मोहन यादव हैं, उनसे क्या संबंध है? मेरे मामा हैं वो मोहन यादव जी. मैं बाबा महाकाल के आशीर्वाद मोहन जी पर रहे. 3 बार विधायक रहे हैं उज्जैन दक्षिण से, और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई और मोदी जी और प्रदेश अध्यक्ष जी, इन सबका मैं धन्यवाद करता हूं, जो मोहन यादव जैसे सबसे छोटे नेता को आज भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया. मैं उन सबका धन्यवाद करता हूं.
अच्छा, आपने कभी सोचा था कि मामा जी मुख्यमंत्री बन जाएंगे? नहीं सोचा था मैंने, लेकिन बाबा महाकाल का आशीर्वाद लिया। एक मामा जी हटे, दूसरे मामा जी आ गए। दूसरे बड़े वाले मामा जी कौन से हुए जो गए हैं आए? जो मामा शिवराज सिंह चौहान मामा थे, और ये भी मामा है हमारे मोहन यादव जी। अच्छा, क्या उम्मीदें हैं अब मोहन यादव जी से मध्य प्रदेश के लिए? आपको क्या लगता है? आपके परिवार में इतिहास बनाया है, अभी आपके परिवार से जो मोहन यादव जो मुख्यमंत्री बने, क्या उम्मीद है आपको? क्या लगता है मध्य प्रदेश का क्या चेंज हो जाएगा? मध्य प्रदेश में जो भी काम है मोहन यादव जी करेंगे, हमें पूरा विश्वास है। बाबा महाकाल की नगरी के हैं वो, और मोहन यादव पूरे प्रदेश भर में सबका ध्यान रखेंगे और ये देश चलाएंगे। आपकी बात हुई मामा जी से? अभी हुई, मामा जी को मैंने अभी बधाई दी, अंदर ही गए थे उस टाइम में उनसे मिला, उन्होंने कहा अभी निर्णय आएगा, जो भी आएगा अच्छा आएगा। और मामी जी से भी बात हुई कि सिर्फ मामा? नहीं, अभी हाल तो मामा से अब बात करेंगे, अभी निकलने का इंतजार कर रहे हैं हम सब। मामी जी को इन्फॉर्मेशन टीवी के थ्रू मिली? नहीं, टीवी के द्वारा मिल गई उनको, वो अभी मैंने बात करी तो उनको मिल गई सबको। So it's back to you, Shiv. Very happy nephew of Mohan Yadav, the next Chief Minister of Madhya Pradesh, thanking God and thanking the top leadership of the Bharatiya Janata Party. But as I said earlier, no one anticipated or expected such a huge surprise from the top leadership of the Bharatiya Janata Party. So Mama 2.0, Shivraj is over, the original Mama Ji is out. We don't know what's in store for him. We'll talk about that in a moment, but the spotlight is still fixed now on Dr. Mohan Yadav. These are pictures from him. He's still on stage. I take it. Okay, these are pictures from earlier today, a few minutes before he was actually anointed. Right now, he's being completely inundated with bouquets and malas and garlands and selfies and things like that. Let me bring Polami in also. She's there in the middle of all this, post-announcement chaos. Polami, is everyone still on stage? What's going on right now? Are we going to hear from Dr. Yadav? Well, we will of course try to catch Dr. Mohan Yadav as he steps out, but at the moment what we've seen immediately is CM security go in, so he's likely to get into that CM carcade and leave from this venue over here in Bhopal. But nobody has stepped out at the moment. All you can hear is the dole. I would be able to show you some pictures if my camera person could pan. But there's a lot of network issues over here because already the jammers are in place. So it's being a little difficult. But you can hear the dole. You can hear the supporters. Also, of course, rejoicing in this moment that the party has finally chosen a name. But there are faces which are very confused as well, Shiv. I'll ask my camera person, Madan, to probably turn around the camera. And you see those very confused faces over here, Shiv. Because they did not see this name in the mix. They're happy that the party has finalized a name. They're happy. I want to ask you a question. Images here, Preeti, of Dr. Yadav's family. Yeah, go ahead, Preeti. Follow me. I want to ask you a question. When did Dr. Yadav find out? Was it in announcement that he figured he was going to be the next chief minister, or did they give him at least a 5-10 minute to take it all in? Well, going by the BJP's track record, he possibly just found out when his name was announced from the dais. This has happened in the past. It will be no surprise. We'll find out, of course, as he steps out. I was narrating that instance of Bhupendra Patel when the man had no idea. He was sitting in the last row, just oblivious to what the proceedings. Dr. Narendra Tomar was making a long speech on the dais, Central Observer at that point of time, to the state of Gujarat. And this is the anecdote which I've been repeating, which is extremely funny, just gives you a sense of what happened. Someone just turned around and said, because it was a 45-minute long speech that Narendra Tomar was giving, someone turned around and said, "Sir, aap neta ban gaye." Bhupendra Patel turned and said, "Main to neta hoon." And the other gentleman said, "Sir, aap Vidhayak Dal ke neta ban gaye." And that's how Bhupendra Patel found out that he is now the Chief Minister designate of Gujarat. The BJP likes playing with its Neta's emotions as well. Listen in to some of the first reactions coming in from the Yadav family, the family of the next Chief Minister of Madhya Pradesh. Listen in. हेलो हाँ वही सर बाइट चल रही है सर बाइट बोलो सीढ़ी एक कड़ी मेहनत से चढ़ी है, उसका फल आज हमारे मामा जी को हम सबको मिला है, क्योंकि उनने और ईमानदारी से बहुत ईमानदारी से करा है देश के लिए काम, तो उसका फल उनको मिला है। आपके दिल में कभी ऐसा सोचा भी था आपने सपने में कि हाँ हमने सोचा था, हाँ मेहनत किया था, भगवान ने फल दिया है।
और मेहनत करेंगे आगे चल के। हाँ, बहन है। हाँ, दीदी, ये दीदी है। हाँ, बड़ी दीदी हूँ। जी बताइए, आपको किस प्रकार से महसूस हो रहा है? अरे बहुत खुशी हो रही है हमारे भाई जीता तो, और सभी का करते हैं और बहुत तरक्की करेंगे। Here's Dr. Mohan Yadav speaking just before the announcement was made. अपने मन से वास्तव में भारतीय जनता पार्टी ये होती योगदान ताली बजाए मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ और आप सबका धन्यवाद अदा करता हूँ। केंद्रीय नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का, समूचे मंच का, मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता को हमारे सभी मित्रों ने मिलकर कर आपके मार्गदर्शन में जो जवाबदारी दी, यद्यपि मैं उस लायक नहीं हूँ, लेकिन आप सबका प्रेम, आपका आशीर्वाद, सहयोग मिलेगा तो निश्चित रूप से मैं कोशिश करूँगा। एक बार फिर आप सबका आभार, धन्यवाद।